enclosures for Arduino projects. Applications include basic circuit simulation, sensor-based projects, robotics, automation, and IoT prototyping. Before we start with the doubt clearing session, let me welcome the resource person of the day, Professor Dr. H.K. Sehjwani, sir. We welcome you, sir. Thank you. And enlighten the participants with few contributions of Professor Sehjwani to the field of education. Though we have already given a brief introduction of Sir in the orientation, today I'll just enlighten few aspects of Sir which we have not discussed yet. Professor Dr. H.K. Sehjwani is a distinguished retired professor of physics with an extensive teaching career spanning 47 years. Throughout his tenure, he has demonstrated a profound commitment to integrating modern technology into physics education, notably through the use of Arduino and microbit platforms. Dr. Sehjwani has authored several influential books that bridge the gap between theoretical physics concepts and practical experimentation using Arduino. His notable work include Innovative Physics Experiments Using Arduino. This book offers a comprehensive exploration of fundamental physics concepts through innovative experiments. It covers topics such as light, sound, servo motors, temperature, and humidity measurement, and time measurement. Each experiment is accompanied by detailed source codes and circuit diagrams, providing readers with practical skills to implement these experiments. Another book I would like to mention of Sir is Arduino Innovative Physics Experiments Never Stop Learning. Published approximately 1.2 years ago, this book encourages students to perform physics experiments using modern technology. It aims to help readers understand programming and learn new measurement concepts, including time, distance, temperature, sound, light, changes in resistance with light, and controlling DC motors to automatically change directions after a definite interval. Dr. Sehjwani's publications have played a pivotal role in enhancing physics education by making it more interactive and engaging. His work bridges the gap between theory and practice, allowing students to apply their knowledge through hands-on experimentation and gain a deeper understanding of physics concepts. So I welcome you, sir, to this session. And I would like to add that the videos which were already uploaded were self-explanatory. Still, I'm sure that each participant must be having few questions to ask from Professor Sehjwani in order to understand more and also to expand their knowledge. I request the participants who have questions to write their names in the chat box, and when we call their names one by one, they can unmute themselves, keep their video on, and ask their questions. So we can start with the questions if anyone is having any question. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा. Okay, is Nilakshi there? Yes, ma'am. Nilakshi, have you watched the videos? Yes, ma'am. Okay, so do you have any question? No, ma'am. Or did you understand? Clear. I understood everything. The video is very clear and good explanation, so I don't have any doubts. Okay, so videos were clear and you understood everything because it was very clearly explained. Okay. Yes, ma'am. So, any other participant who would like to add on or give any remark on the videos uploaded? Kashish, are you there? Ma'am, Lakshita raised her hand. Lakshita. Yes, Lakshita, you can unmute yourself and also switch on your camera. Yes, ma'am. I just wanted to remark about the videos that
Absolutely, they were very clear, like Nilakshi also said. So I don't think there are any doubts because the code was also very well explained and it's easier in Tinkercad and everything. That's great. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, we were expecting that as the videos were self-explanatory and sir has remarkable ability to explain everything in so much detail and clarity that you would understand in one go. Okay, thank you, Lakshita and Nilakshi. Any other participant who would like to add anything? So maybe we can ask the participants what they have learned from those videos. If they really was, they must be having something to add on. I cannot see the list of participants. Dr. Parul, can you help me? Okay, now, yes. Karina. Karina is there? Karina? Yes, ma'am. Yeah, would you like to add something? Have you watched the videos? Yes, ma'am. I have watched the videos and the videos are very explanatory in like सब कुछ समझ आया काफी अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन थी कोड्स में भी एक जगह डाउट आया था बट वो क्लियर हो गया था बाद में जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो आप सब कुछ समझ आ जाता है उन वीडियोस में So did you try yourself and यस made मैम you did the programming yourself and मैम आई it हैव worked? डिड द प्रोग्रामिंग एंड इट वर्क Okay, that's great. Sir is really very happy to get your feedbacks because he has more videos to share with you. Maybe in the next week we'll be sharing. All right. Thank you, Karina. यस मैम We have Alia. Alia, is Alia there? We would like to hear from the participant who have joined from outside. Divya Kalra, ma'am, are you there in the meeting? Yes, good evening, everyone. Good The evening, ma'am. videos were self-explanatory. Thank you so much, sir. The only thing I want to explore is I was able to do programming in Tinkercad, but I need to explore more about the Arduino app. It was easy to perform programming in Tinkercad as compared to the Arduino app. So I will be learning more about that. So, sir, if you can guide me on this. No, I will Definitely. explain today. Okay, thank you, I'll sir. explain it today itself. Okay, sir. All right. Thank you, You- Divya, ma'am. So I guess, sir, we can like take this topic of Arduino and so would you like to share your screen? Okay. So a simple question was asked that you could do the programming in the Tinkercad, but you could not do it on the Arduino. It's very simple actually. If you could do the programming in the Tinkercad, then what you can do is you can copy the program from the Tinkercad, open the Arduino. I'm just opening the Arduino. Just see, I am opening the Arduino. Meanwhile, that It is Arduino coming. is It is coming. yeah. Yes, sir. So It I just takes have some. a small announcement to make that we are uploading the assignment which has already been announced by today. So that assignment is based on the first session taken by Mr. Arun.
and these 2 sessions by Professor Sajwani sir. So you will have to do those assignments and submit by Friday. See, this is the program that you can see on the screen, and it is only the crosslight.ino. INO, in fact, is a extension for any Arduino program. Whenever you make a new program and save it on the Arduino, then it is always given the extension .ino. Just as in the case of the Word you can DOC or DOCX, and similarly for the other programs, say Excel, the extension is something different. For everything, the extension will always be different. For the programs in the BASIC, the extension is .bas. For example, so for any program, in some other language, say it's a program is called as, the extension is given as .prg, etc. So for Arduino, the extension is .ino. मैं एक्चुअली ज़्यादा पसंद करता हूँ हिंदी में बताना, तो इसलिए मैं आपसे हिंदी में बताऊंगा, अगर आप अनकंफर्टेबल ना हो तो। अगर आप अनकंफर्टेबल है हिंदी से, तो मैं इंग्लिश में ही बोलता रहूंगा। टेल मी व्हाट डू यू वांट। Participants, if any of you is not comfortable in Hindi, you can just write in the message. If you'll get Okay. no message, then sir will continue in Hindi. Okay. Okay, sir, you can I'll be continue. in taking Hindi. both the languages. तो जहाँ इंग्लिश की Sure. जरूरत होगी वहाँ इंग्लिश बोलूंगा, जहाँ हिंदी की जरूरत होगी वहाँ हिंदी बोलूंगा, ठीक है ना। सो मैं एक नया प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। सपोज मैं एक यहाँ पर नया प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल पर जाता हूँ। मैंने अपना आर्डुइनो का वो खोल दिया, आईडी खोल दिया, और ये जो पिछला प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम था, वो उसने यहाँ पर खोल दिया है। पर मैं अपना आपको दूसरा प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। यहाँ फाइल पर जाते हैं, फाइल पर जाकर और हम फाइल पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहता है, न्यू न्यू स्केच। इनके प्रोग्राम को ये स्केच कहते हैं, मैं प्रोग्राम कहता हूँ, पर आर्डुइनो की जो जो सेल वेबसाइट है वो इसको क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। तो मैं न्यू स्केच कर देता हूँ, यहाँ पर खोल देता हूँ। तो जैसे ही मैं न्यू स्केच करूँगा, तो मेरे पास एक नया स्क्रीन खुल जाता है। इस नए स्क्रीन में इस नए स्क्रीन में आप देखिए, दो फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताए थे ऑन दी फर्स्ट प्रोग्राम, जो जो हमारा स्टार्टिंग था। वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि दो फंक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, एक तो वर्ड सेटअप फंक्शन होता है और एक वर्ड लूप फंक्शन होता है। ये दोनों ही फंक्शन बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा हमें बाकी दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। और मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप पहले आप इसको क्या करते हैं, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं है। मैं पिछले वाले प्रोग्राम को अब मैं क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नया प्रोग्राम खोल लिया है। तो इसको प्रोग्राम को मैंने बंद कर दिया, और इसको मैंने फर्दर चला दिया। इज इट विजिबल? Yes, sir. हाँ, Yes. ओके ओके। सो नाउ, अब इस प्रोग्राम को पहले पहले हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, कहीं किसी न किसी जगह पर सेव करते हैं। और यहाँ पर फाइल को यहाँ पर कर दिया है, और हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करने के लिए कहेंगे, ये हमारे पास ले जाएगा कि किस डायरेक्टरी में आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आपने पहले ही आर्डिनो के प्रोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कोई डायरेक्टरी बना रखी है, तो इसको आप वहीं पर सेव करेंगे। नहीं तो आप ये यहाँ पर जो है, आप यहाँ से नीचे जाइए और दिस पीसी पर जो होता है, हाँ, दिस पीसी पर देखिए, मेरे पास जो है ना, वो बहुत सारे ड्राइव्स बने हुए हैं। मैंने बहुत सारे ड्राइव्स बने बने हुए हैं, और एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल
ये भी लगा रखी हैं, दो दो पेन ड्राइव भी लगा रखी हैं। यू कैन सी दीज आर द टू पेन ड्राइव। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पर जो मेन विंडो होती है वो विंडो सी होती है। उसके बाद आप उसमें से जितने भी ड्राइव बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। तो वो मतलब इस समय सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास डाटा डाटा फाइल डाटा ड्राइव है, सॉफ्टवेयर ड्राइव है, सॉफ्टवेयर टू ड्राइव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बहुत सारे ड्राइव बना रखे हैं और मैं इस समय उसको डाटा ड्राइव में मान लीजिए सेव करना चाहता हूँ या विंडोज़ पे सेव करना चाहता हूँ। पर मैंने आपको बताया पहले विंडोज सी में कभी मत सेव कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कोई भी वो ये डायरेक्टरी बना लेता हूँ। शायद मैंने इसमें अपना ये भी बना रखा है। कोई बात, मैं नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ। सो अब मैं राइट क्लिक यहाँ पर करता हूँ, राइट क्लिक क्लिक करके यहाँ ये मुझे न्यू कहता है। न्यू यहाँ पर आ गया है। न्यू क्या चीज़ बोला? फोल्डर। फोल्डर बनाने के लिए कह रहा है, मैंने इसको फोल्डर के लिए कह दिया। यहाँ पर मेरे पास आ गया। इस फोल्डर में मैंने क्या कह दिया बोला? माई 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 आर्डिनो प्रोग्राम्स। यहाँ पर लिख दिया आर्डिनो आर्डिनो प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स। इस फोल्डर में इस फोल्डर में मैंने स्केच का नाम सेव करना है। और मैं क्या सेव करना चाहता हूँ? मैं आज सेव करना चाहता हूँ ये पहले तो खोल लूँ मैं ये। हाँ, मैं इसका नाम जो मर्जी आप कहें, मैं उस नाम से इसको सेव करता हूँ। से मैं इसको 3 LED के नाम से सेव करना चाहता हूँ। ओके, तो 3 LED LED नाम से मैंने इसको सेव करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, मेरी इस डायरेक्टरी में वो फाइल जो है वो इस नाम से हमारे पास वो सेव हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये ऊपर ऊपर आ गया, देखिए 3LED.ino आ गया यहाँ पर। तो ये जो भी एक्सटेंशन बनेगी, जो भी आपकी फाइल बनेगी, इस नाम से बनेगी। अब आपको मैंने बताया था कि जब मुझे जो काम मुझे करना होता है, उस काम के लिए मैं क्या करता हूँ? मुझे थिंकिंग करनी पड़ती है कि मैंने करना क्या है। अगर मैंने 3 LEDs को चलाना है और उन एलईडीज को अलग अलग टाइम के लिए चलाना है, तो 3 तो मेरे पास डिवाइस हो गए। कौन से? जो रेड रेड लाइट होगी या ब्लू लाइट होगी या ग्रीन लाइट होगी, जो भी होगी उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें थिंकिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर मैं 3 एलईडीज को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, वो डिफाइन कैसे करता हूँ? क्योंकि वो एलईडीज किसी न किसी पिन पर लगाई जाएंगी। इसलिए इसलिए मैं क्या करता हूँ बोला, मैं इंटीजर ये इसका इंटरनल फंक्शन है। जो कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत बहुत किस्म के होते हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, सीखनी होंगी। इंटीजर मैं क्या करता हूँ, रेड रेड मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 10, 1098, ये ओके। रेड मैंने 10 कर दिया। और कोई भी जो कमांड होती है उसको हम हमेशा सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एन टी ग्रीन येलो इज इक्वल टू से 9। इसका मतलब क्या होगा कि रेड की जो पिन होगी उसको हम डिजिटल पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्रीन येलो के उसको वायर को हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? 9 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ आई एन टी से ग्रीन, और वट एवर यू कैन से आई एन टी ग्रीन मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इक्वल टू 8 करके मैंने सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे सभी कलर्स को, सभी एलईडीज को अलग अलग टाइम के लिए क्या करना है, उसको उनको चलाना है।
अगर अलग अलग टाइम के लिए चलाना है तो वो टाइमिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे। वो वेरिएबल मैं क्या लेता हूँ, वो वेरिएबल मैं लेता हूँ आई एन टी इज इक्वल टू आई एन टी, कौन सा बोला, आर डिले। मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो रेड बल्ब जो हो वो इतनी देर तक चलता रहे, कितनी देर तक चलता रहे, इज इक्वल टू से 5,000। मैंने इसको 5,000 लिख दिया। 5,000 का मतलब यहाँ पर होगा 500, 5 मिली सेकेंड, 5,000 मिली सेकेंड। और 5,000 मिली सेकेंड का मतलब होगा 5 सेकेंड यहाँ पर। उसको मैंने सेमीकोलन से फिर ये कर दिया। फिर इसी तरह मैंने इंटीजर इंटीजर जैसे ये वाई डिले कर दिया, वाई डिले। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम, वेरिएबल का नाम वाई डिले ही रखें। आप जो भी रखना चाहते हैं नाम, जो आपको सूट करता है, आर डी लिख दीजिए, आर डी लिख दीजिए, आर डी जो वाई डी लिख दीजिए, जो मर्जी। पर जो भी आप नाम लिखेंगे उनको आगे जाकर उसी तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है। आर डिले, वाई डिले इज इक्वल टू से आपने से 2 सेकेंड, 2,000 सेमीकोलन लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद ये आई एन डी लिख दिया है मैंने, आई एन टी होना चाहिए, आई एन टी। तो उसके बाद फिर फाइनली क्या हो गया मेरे पास, आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी। दूसरा कौन सा रह गया बाकी, ग्रीन, जी जी डिले, LAY डिले, सेमीकोलन डिले, जी डिले इज इक्वल टू सपोज मैंने लग दिया 6 सेकेंड, 6,000 सेमीकोलन। ये मैंने जब लिख दिया इसको, तो उसके बाद हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 3 डिवाइसेस हैं, 3 डिवाइसेस के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कुछ लिख दिया। और मेरे पास जो डिवाइसेस हैं, ये जो है, ये टाइम कितने कितने टाइम के लिए वो चलेंगे, ये लिख दिया। और भी अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक डिवाइस और लगाना चाहता हूँ, एक स्पीकर लगाना चाहता हूँ, तो मैं उस स्पीकर के कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई इसको उसको किसी न किसी पिन के साथ तो लगाना पड़ेगा। और जिस पिन के साथ लगाना पड़ेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आई एन टी वो लिखकर और पिन का नंबर दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, वाइड सेटअप में जो भी कुछ लिखा जाएगा वो एक हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट है, उसको हम ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक में जो कुछ लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ जो है, वो पिन मोड बताना पड़ता है। जो ये हमारा जो डिवाइस है वो कैसा डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। अगर तो वो इनपुट डिवाइस है तो हमें इनपुट लिखना पड़ेगा, अगर आउटपुट डिवाइस है तो हमें आउटपुट लिखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ लाइट दे रही है या कोई चीज़ मोशन कर रही है या हमें कुछ और चीज़ हाथ देखने को मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आउटपुट मोड कहेंगे। जैसे स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ आती है, क्योंकि वो आवाज दे रहा है इसलिए वो हमारे पास क्या है, हमारे लिए आउटपुट है। वहां से आउटपुट आ रही है, हमारे कानों में वो इनपुट हो रही है। तो वो तो आपने लॉजिक लगाना है कि ये हमारे पास आउटपुट है या इनपुट है। क्योंकि एलईडीज हमारे पास क्या करते हैं, एलईडीज तो लाइट देते हैं। और क्योंकि वो लाइट देते हैं इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। तो हम पिन मोड करते हैं यहाँ पर, पिन मोड पिन मोड किस चीज को, किसके पिन, रेड को। जो हमने जो रेड डिवाइस ले रखा है, रेड एलईडी रखा है, तो हम उसको कहते हैं कि रेड को पिन मोड दो, क्या चीज बोला, आउटपुट। आउटपुट का OUTPUT। और ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ओहो, ये क्यों क्यों आ गया, ये गलत हो गया, ये आउटपुट मोड हो गया, करेक्ट है। तो क्योंकि ये आउटपुट मोड हो गया इसलिए इसको इसको मैं क्या करता हूँ, फिर मैं क्योंकि सभी के लिए ये करना है तो मैं इसको इतने पोर्शन को लेकर कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से कॉपी हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+V से मैं उसको ये लिख देता हूँ। और फिर एक एंटर करके मैं Ctrl+V से और भी कर देता हूँ। तो रेड की जगह अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने क्यों यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, आई विल राइट डाउन येलो, येलो। ये भी मेरे पास है। और ये इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, बोला ग्रीन लिख दूंगा।
ग्रीन, ग्रीन। तो ये मैंने जब लिख दिया, तो अब इसका इसका देखिए सेमी कोलन यहाँ पर लगाना मैं भूल गया। यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, नीचे भी सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास इस नीचे भी, यहाँ पर भी मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। मेरे पास 3 डिवाइसेस थे, हर डिवाइस के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक मोड उसका बता दिया, और उसके बाद हमारा सेटअप का जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई। ब्लॉक के अंदर अंदर है जो चीज़ें, तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको उसने सेटअप कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास लूप। लूप, ये मैं You don't just deal with shots every day. You leave. When meetings were highly लूप में मैं क्या करूंगा बताइए? बहुत आसान है। when your day आपको उस is दिन भी समझाया था मैंने, तो मेरे ख्याल में इस समय आप बता सकते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। पहले पहले मुझे क्या करना चाहिए भला? पहले डिजिटल राइट करना चाहिए। डिजिटल राइट करना चाहिए। किसको राइट करना चाहिए भला? as well with the muscles. रेड को डिजिटल राइट करना चाहिए, और उसके ऊपर उसको क्या करना चाहिए? हाई करना चाहिए या लो करना चाहिए? पहले तो हम रेड को जलाएंगे, उसके बाद हम येलो को जलाएंगे, उसके बाद हम ग्रीन को जलाएंगे। लॉजिक है, सिर्फ सिर्फ लॉजिक लगाइए और आपका काम होता चला जाएगा। मैं क्या करता हूँ? डिजिटल राइट क्यों कहता हूँ मैं, इन एनालॉग राइट क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे डिजिटल उसका जो पिंस हैं उनके ऊपर हमने लगाए हुए हैं, अपने अपने एलईडीज हमने उसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ? डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, और मैंने ब्लॉक अब कर दिया। अगर मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी होगी तो आप देख रहे हैं, पहले ये ब्लैक कलर था, इस समय एकदम से रेड कलर बन गया है। डिजिटल राइट, क्या किसको डिजिटल राइट करना है? हमने रेड को करना है, RED, रेड को। क्या करना है बोला? इसको ऑन करना है या ऑफ करना है? हमने पहले, अगर आपकी मर्जी है, पहले आप उसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। पहले मैं तो ऑन करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बोला? इसको हाई कर दूंगा, HIGH। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप, ये जो है हमारे पास केस सेंसिटिव है, और इनके इंटरनल प्रोग्राम में जो कि सी से बनाए हुए प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में HIGH ही दे रखा है। किसके लिए बोला? ऑन करने के लिए, या हाई वोल्टेज देने के लिए, हायर वोल्टेज देने के लिए। नॉर्मली ये हायर वोल्टेज जो होती है वो 5 वोल्ट होती है, ठीक है। तो रेड रेड कॉमा हाई कर दिया तो ये रेड बल्ब जल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ना थोड़ी देर तक जलता रहे। कितने टाइम तक जलता रहे, उसके लिए इन्होंने हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। वो फंक्शन हमारे पास क्या है भला? डिले फंक्शन है। डिले फंक्शन में कितनी देर के लिए डिले करना है? R डिले के बराबर, यानी कि रेड जितनी देर के लिए मैंने टाइम दे रखा है, 5 सेकंड का दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या दूंगा? R डिले, DLAY, R डिले कर दिया है मैंने। इतने देर के लिए वो जल जाएगा। अब वो जब जल गया तो उसके बाद दूसरा येलो ऑन करने से पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा कि मैं राइट, जो जो रेड लाइट को, रेड बल्ब जो है उसको मैं बुझा दूं, तो उसको मैं ऑफ कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं बोला? डिजिटल राइट। मैं कॉपी भी कर सकता था, मैं कॉपी करता हूँ, इट इज़ बेटर, वो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बोला? Ctrl+V कर दिया। कंट्रोल, तो पिन मोड नहीं, मैंने किसको किया था? हो एनीवे, इसको मैंने सेलेक्ट किया। Ctrl+C तो मैंने किया ही नहीं यहाँ पर, तो Ctrl+C नहीं किया तो नेचुरली ये यहाँ पर हमारे पास पिछली वाला जो था Ctrl+V। देखिए, पहले ये ऑन हो गया, फिर डिले हो गया, फिर अब हम क्या करना चाहते हैं? इसको ऑफ करना चाहते हैं। तो ऑफ करने के लिए हाई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा बोला? लो लिखना पड़ेगा, वो भी कैपिटल में, LO। अब ये हमारे पास क्या हो गया बोला? रेड लाइट जली, कुछ देर के लिए जली। कितने टाइम के लिए? जो टाइम हमने उसको 5 सेकंड दे रखा है, 5 सेकंड के लिए जली। उस 5 सेकंड तक ये चलती रहेगी, और उसके बाद हमने रेड लाइट को ऑफ कर दिया।
जब हमने रेड लाइट को ऑफ कर दिया, अब यही काम हमने जो करना है उसके किसके साथ करना है, बोला येलो के साथ करना है। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और नीचे आया मैंने कंट्रोल वी से इसको इसको पेस्ट कर दिया। अब रेड की जगह मुझे क्या करना है सर, रेड की जगह मुझे क्या लिखना है, येलो लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, YELLOW, येलो लिख दिया, क्योंकि ऊपर स्पेलिंग जो है वही नीचे स्पेलिंग होनी चाहिए, करेक्ट है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा भला, आर येलो लिख दिया। उसके बाद ये आर की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और ये इस रेड की जगह फिर येलो आ जाएगा, इस रेड की जगह येलो आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या करना है, ग्रीन। इसको हमने येलो को हमने ऑन कर दिया, फिर हमने इसको क्या कर दिया बोला, ऑफ कर दिया। और मैं इसको कंट्रोल वी से फिर दोबारा से वही सेम ले आता हूँ। अब रेड की जगह मेरे पास क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ग्रीन। और उसके बाद मैं क्या करूंगा भला, रेड की जगह ग्रीन कर दिया, और आर डिले की जगह मैं क्या कर दूंगा भला, आर डिले की जगह मैं जी डिले कर दूंगा, क्योंकि ऊपर मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है, जी डिले डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर भी रेड की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा भला, रेड की जगह मेरे पास ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन, GREEN, ग्रीन हो गया। तो ये हाई हो गया, लो हो गया। अब मुझे उसके बाद क्या होता है, रेड के बाद हमारे पास येलो आता है, येलो के बाद हमारे पास ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद फिर क्या आता है, हमारे पास येलो आता है। और येलो का हमने पहले लिखा हुआ ही है, क्योंकि येलो का हमने पहले लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया। सुधा, सुधा, और यहां पर मैंने उसको कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, येलो। अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, अब इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन हमारे पास क्या है, वाइड लूप हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। मुझे आर्डुइनो लाना पड़ेगा, एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, मैं आर्डुइनो ले आता हूँ। और जब तक मैं उसको कनेक्ट नहीं करूँगा, आर्डुइनो बोर्ड को जब तक मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, तब तक मुझे मुझे ये बोर्ड के सिलेक्शन ये नहीं लेने देगा। तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग विद इन 1 minute। Sure, sir. Okay, participants, as I said earlier also, there's slight change. I'll come in within 1 minute. Okay, sir. By tomorrow, 9 a.m., your assignment will be uploaded, and just you have to go through those assignments and submit by 10 p.m. on Friday. So if you want to ask anything regarding assignment, or if after reading those assignments, if you want to ask anything, you can put your queries in the WhatsApp group. The assignment is the same as given by Arun sir in the previous class, right? That assignment, yeah, that is one question that is there, where I guess Mr. Arun has asked you to take screenshot of PCB layout and PCB schematic, right? Yes, ma'am. And you have to just make sure that your name is written on the schematic and the layout. That is mandatory. Okay. Yes, ma'am. So that is one question. And apart from that, there will be 3-4 more questions from
the session 2 and session 3 by Professor Sejwani sir. So you will get some few questions on hands-on on Tinkercad and Arduino. Okay, ma'am. Right. So while sir is explaining the program, if any participant would like to ask any question regarding any syntax or anything, then you can unmute yourself and ask your doubts. You can see that this is the Arduino. Unless I Yes. connect this Arduino with the help of its cable, to my laptop, this program will not run. See, I will try to show you something. See, if this program we have written, and I'm sure that this program is correct, unless there is some error. So this is the point where you can verify your program. When you click on this, on the right hand side, you can see that there is a verify is written. So if I click it, then it will give you the error. Red light, it is showing the error. What error it is showing? That is missing fully qualified board. That means it is saying that you have not connected the board. So unless I connect the board, it will not at all run the program. So what I do is I connect it to the board. Perhaps it is because of this reason that the experiment could not be done on the Arduino. Now once you have done, once I have connected the board, then it will show that something. It is showing this mega board. So I select the mega board. This board is higher version of Arduino Uno. Arduino Uno is small, but this is exactly the same thing. But only thing is that number of the digital pins and the number of the analog pins are more on this. But otherwise, everything is the same. So it has now connected the analog, and then I have to see what. Go to the tools, and on the tools, what you do? This is the board, and this is the COM port. It is showing that this is connected to the COM means communication port. It is a communication port is this one, and therefore both the board as well as the communication pin are connected, and therefore now if I verify, then nothing will come on the red. It will come out to be the white word. So I have just given it the command. You can see now it is not showing any error. It is showing that white thing is white text is coming, and therefore it is not showing any error. Now what I do is I will now run the program. I will now post this program on my Arduino. It will be posted on the Arduino. So I have I just connected to the upload. This one is showing that it is the upload one. So I just connected to this. So it has been uploading. It has been uploaded, done uploading, and once it has done uploading, then the connections. If the connections are okay, then it will start running. So this is, of course, you can. I can show you that on this, all the three LEDs are connected. All the three LEDs are connected, and the one is connected to the red is connected to the pin number 10. Green is connected to the pin number 8, and yellow is connected to the pin number 9. In this, you can always see this thing. And now if I give it ground, since I have not given the ground, therefore it is not running at all. So ground pin I will connect to wherever the negative part of the resistance is given. See now,
It is working. Participants, are you able to see? Yes. Yes, ma'am. Yes. Then Yes, yellow sir. and then red. You are able to see? Yes, sir. Yes, sir. So this program I have written in a few minutes only. Yeah, because I have applied the logic. So if you apply the logic, and but what is important is that Arduino board must be connected to your device, that is the laptop or the desktop, whatever you have. Okay? So once it is done, it will be definitely working. So previously it was not working. It was not showing any errors. It was showing only the errors since it was not connected. Now I show you that there are certain types of the errors which will be coming across. Suppose I do not write down this semicolon. See, I have removed the semicolon. Semicolon is essential because it is the end of a particular command. Command is that integer yellow is equal to 9. But immediately after that, it is written integer green is equal to 8. But the previous command was not completed. And therefore, if I now try to verify, even if the board is connected, even if the pin mode is there, communication port is connected, still it will show you the error, and error will always be shown in the red. See, I just do it. Oh, just see. Everything it is red is coming, red is coming, red is coming. From where? See, integer. Say before the integer green is equal to 8. Integer green is equal to 8. Before that the semicolon is missing. Semicolon is missing. It is telling you that its semicolon is missing. So if you just put the semicolon here, and again try to verify. What will happen? It will be in the white color, white text. So it is white text. Okay. And suppose I forget about the writing the integer. It is I don't write down as the yellow is equal to 9. Okay. I forget to write down that it is what type of the variable it is. You have to tell whatever variable you are defining. You have to tell which type of the variable it is, whether it is a float type or the Boolean type, integer type. And since we are connecting to the pins, and there is no digital pin which is 1.1 pin, there is no digital pin which is 2.2 pin. So it is not. It is only an integer. It is 1, 2, 3, 4, 5 up to 13. Okay. So I have to write down that it is a integer type. So I just remove it, and then give it the verification. I try to give it to the verification. So again there is an error. See, and it will be telling whatever type of the error it is. Okay? So real lock. I have to write down it, of course, the integer, and again verify it. Verify it. Okay? Once I verify it, it will come out to be okay. It comes out to be perfectly okay. So, and there are, suppose now I just put the oh, it will be easier to remove this. Sir, even if missing bracket sometimes gives error. Like, Yes. even if the logic is, even if a No, student if the has logic very good is logic wrong, and he's able to write big programs, no, complex if programs, the but logic is sometimes wrong, then of course it then will still work, but it will give you the unexpected result. So yeah. right. Yes. So I'm just giving this, making it as a comment. When you type two slashes, just I have written here, then you will see this slash, slash.
So what I have done is, you can see here, what I have done is, I have almost removed this void setup, because whatever is written on the slash right hand side, it is considered as a comment. So there is no word setup here. There is no word setup here, and I try to verify it. What I want to emphasize is that both the functions are essential. Both functions are essential. So I just try to do it, yeah, and it will say that setup is not there. The exit status 1, this setup is not there. It will be telling you a few things, and therefore function is not there. In function main collect2.exe error is there. So this is a main function. It is a main function. Okay? And what I do is now I am just removing this. So whenever you are doing programming, you must know, are you making any error or no? And what are the errors that are possible errors are there? So if you miss a function, then of course there will be a problem. If you say give the wrong variable type, then there will be a problem. If you do not put the semicolon after each of the this one, it will be a problem. Okay? And now again I verify the program. Program is okay. You can see that program is okay. Now, one thing more that I want to show you here is that if instead of the high, I write down 1. So in commands, you know that 1 is high and 0 is low. And low की जगह मैं क्या कर देता हूँ? 0 लिख देता हूँ. In others, I am not doing anything. Here I am writing down the yellow is equal to 1, and sorry, here yellow is equal to 0. Okay? Or red is equal to 1 and red is equal to 0, I could easily write down. While loop, yes. And digital write. What? Acha, okay. Where is red? Red I have removed. Anyway, whatever it is. Okay? So I have written 1 and 0. So even if I have written 1 and 0, okay. Red is also there. So high की जगह at high I write down 1. At low I write down 0. So high is considered to be 1 and low is considered to be 0. So even if you write down the low or even if you write down 1, it makes no difference at all. You should understand that 1 is high and the third one I have not changed. Here, of course, low, etc. is written and I'm not changing. And I'm just verifying it now. Let me verify. Is there any error? It says there is no error. See, there is no error. And once you make any changes, then you have to again upload the program. See, I am just again uploading the program. So I am writing like this. It is uploaded, and it is working. Oh. So there is a question, may I ask, from Sure. Alia and Tushar. They're asking that, sir, I want to ask if the indentation is necessary for Arduino coding. No indentation is required. That is the beauty of this. Beauty of this program. In case of the Python, indentation is a must. If there is a mistake in the indentation, what is being done by this program? It is making this blocks. Since blocks are there, so it has not to bother about where the delay is written. You can see here the delay is here, and in this delay is at the different place. You can see.
This relay is one place here, one place on the left hand side. So I am just removing it, yeah, and I can just change the position also. It will still be the same. So indentation is not required. Any other question? No, sir, not now. Okay, so it is still working. You can see that now. Now, if you want to change the timings, say suppose from 5 to 10,000. Say this is 10,000, and this is 2,000, and this is say 15,000. And they say this is 15,000. 15,000. Once you make any changes, important thing is once you make any changes, you have to verify, you have to again upload it. The program has been uploaded. And now you will see that the timings have changed. Time for blue is the green is okay. In place of the yellow, this is red. Red, I have given time 10 seconds. You can see from your own. Is that clear? Kindly unmute yourself. Participants are requested to unmute themselves. If they're not asking question, then kindly unmute yourself. Then mute yourself. Only for asking questions you have to unmute. So timings are for everything has changed only. Okay. So this program is there, is finished. You can add any number of the devices into this. You can add a speaker. You can add anything else. Okay. But for that, now what I do is this program could not be done by teacher, yeah, because she might not be having the Arduino, and since she was not having the Arduino, therefore she could not connect it to the laptop, to the device, to the laptop, and therefore verification was not possible, and the uploading was also not possible. Now you can see that you need to, but in case of the other program, that is the what you call mm, Tinkercad. In case of the Tinkercad, you need not buy anything. You need not do it. And now I will show you how from the Tinkercad you can come here. How from the Tinkercad you can come here. So that will be a very, very simple thing now for anyone to see that whatever we are making here, that we can take to the Tinkercad, and whatever we are doing in the Tinkercad, that we can bring to this place. That will be the beautiful thing to be seen. Just see, I am just making it small, and I am going to the Tinkercad. This is really very interesting, sir. You will see now. A great honor, and this is only for me to be a part of this short-term course on product designing with But I am directly moving to the other thing that I'm clicking to the Tinkercad. I forgot to thank you. But you will just see that a Tinkercad is there. Create what? Create the circuit. In fact, we can just tinker the things.
tinker the circuits, because we have already made some circuits, so we'll be using the tinker. Oh. Here is a mixed color program I'm showing you, and that's let me do other thing. Yes. So you can see this program, the same program that we did last time, and I want to transfer the program of this to the program of to other program. Just see, yeah. So this program is there, and this program is there, and you can see that there is a code corresponding to this code we have already written last time, or we have written this code is there, delay this high, etc., etc. And what I did was that I wrote it in front of you. I am just now removing it, whole of it. I am just removing it, just removing it, and then try to ask it to simulate. So it will not do anything. See, it is not doing because nothing is there. Neither no function is there. No function is there. Neither the setup function is there, nor the loop function is there. So I want to bring the program from the Arduino to this. So if I want to do that, I go down. Make it short. And the program was, this was the program. This was the program. Okay, I copy it. I copy whole of the program. Control C. Control C. Then I come to the Tinkercad. And you can see that in code, nothing is written. Nothing is written. So since I have copied there, Control C, now I will do what I will do is, oh, sorry. I will come to the code. And in nothing is written here, so I will do Control V. Okay. I have brought this program from the Arduino to the Tinkercad, and then I run the program. Just simulate. It will do the simulation. See, red is lighting. Then there will be yellow. Yellow. After how many seconds? How many? 15. I think we did 15. Then it comes green. Green, then again yellow, then again this one. Okay, so you can switch from the program to the another program. So from Tinkercad to the Arduino, from Arduino to Tinkercad. I can now remove the Arduino program and copy this one from here, and then write it into the Arduino. Okay, so that will be helpful for you, for everyone to understand. See, understanding the transfer from one program to the another program is an easy process. Therefore, without buying anything, you must first of all make a program on the Tinkercad. Try to find out whether it is giving you the result as per your requirement, and if it is giving the result as per your requirement, then you buy the components. Okay, so here in fact you can see that it will be telling you which component you are using.
Circuit view is will be visible here. Oh no, this one. This is the these are the connections. When I click on this, these are the connections, and with from these connections, the printed circuit boards can also be created. So you just see it is giving you all the connections, and from this, I think Mr. Verma will be able to create the printed circuit board corresponding to this, and therefore the product designing and the other things will become very simple, very simple. So I come again to the main program. Okay. So what I will do is, I will copy now from this. I will copy everything from this. Here. Control C, I will copy. I will go to again the Arduino program. I have gone to the Arduino program and delete everything. I have deleted everything. Let me try to verify. Error. Okay. But since I have already copied from the Tinkercad, I will simply write down Control V. Sorry. And I will have to again go to the Tinkercad, copy whole of this program, go to my Arduino program, and control. Why it is not coming? Oh, I have not cancelled it, na? Paste. I have copied and pasted. Now you just try to verify. Program is okay. Then you just upload it. It will be uploaded, and it will start working as it was working earlier also. Okay, so I think the teacher who asked about this must be satisfied. Ask from her whether she understand or she has any doubt about it also. Yes, sir. Thank you so much. Okay, so if there is any problem, you can still ask from me. I was able to do the programming right now and with no error. Thank you so Okay, much. very good. Thank you very much. But now, in case of the Arduino, I want to show you something more. Say I am just closing it down. They're closing this Tinkercad also. Where is Tinkercad? Yes, this is the Tinkercad. I am closing this Tinkercad also, and I want to show you something more. What is important is that when you go to the arduino.cc, you are reaching this screen, and in this screen there is a last time what we did was that we clicked on the software, and then it is taking time. So you have to accept the cookies. Huh? Oh, yes.
See, this is the documentation part which I want you to understand and grab and try to remember a few things. Okay, which is very, very important if you want to really do something in this. See, when you documentation in the documentation there is a programming part here. You can just see there is a cloud, there is a browse hardware, hardware, etc. You are not interested at the moment. I am also not interested at the moment in making a hardware for me, but I am interested in telling you that there are certain programs which you have to programming part. So I just click on the programming part. So on this there are a few things which you should understand: language references, libraries, built-in examples, MicroPython, Cloud API. We will not be discussing the MicroPython and Cloud API at the moment. We will be, of course, I'll be telling you something about this language references. In language references, you can see that there are certain libraries. There are built-in examples. Built-in examples are also there. Yeah, which you can run at any moment. If you want to really learn something about the Arduino, then see there's a serial, write, print, etc. There are program there. The language reference I have chosen. Yes, language. So see, there are digital input output. There is a digital read, digital write, and the pin mode. These functions are given, and corresponding syntax is also given. You see, digital is small letters, but read ka first letter is your R, capital. So whatever these functions are there, I have to use these functions as they are. In After writing any word, if there is a small bracket and closing bracket, then it always denotes the function. So these are all functions: digital read function, digital write function, then analog read and analog read resolution. Forgot about it. Analog reference cell, analog write, analog read, analog write resolution means what resolution you want to make for your screen. Say in pixels, of course. Then cosine function, sine function, tangent function. Then there are there are the no tone sound. For sound you will be using tone function. Tone function will be there. Then no tone function will be there. Pulse-in will be for the pulse to be sent from one point to the another point, get it reflected. Then time interval between the two, it will be used by Pulse-in. We shall be using this function. Yeah, other character functions are there. Then time functions are there. See, you can see the delay is there. Delay, which I use in my program. Delay function is there, and this delay was in microsecond, but for the microsecond for millisecond, but delay microsecond function is for the microsecond function times. So you can see that you can measure the time in microsecond, and you can find out what will be the accuracy of your results. Okay, when you are measuring the time in microsecond. Okay, then random function is there, random seed is there, then print function is there, serial function is there. There are large number of the function. For each function, if you want to understand something, then you can click on that. Say micro. So it will be giving you the details about the description about this, and one of the programs will be using it. Will be giving you the one of some program also, which you can copy from here, and then paste it on your Arduino program. So, and it will run as if there is no error in this. Okay? So you say, suppose is this function. Oh, what has happened? So same code will work for Tinkercad as well? No. All the functions are defined only in this.
yes. So if you want to, if you want to know something about the about any function, and while using that function you are making any mistake, then you should read from this. These are the functions which you should practice to be able to make any program that you want. Yeah. In fact, I have made 16 programs, 18 programs in my I have written 18 programs, well documented, with program corresponding to each of the experiment that I have done. I have created 16 experiments of physics, and all these 16 experiments of the physics are given in my book, which is known as the Arduino. This innovative experiments using the Arduino. Innovative experiments in physics using the Arduino. Okay, and I will request you to give that link to the students if they are interested, and they can use that book. Okay. Definitely, sir. Definitely, that book will be Okay. useful for all Okay. of us. So I'm now. This was a very important thing that I wanted to tell today also. Chicken, and this. I'm just closing this reference. Yes. So now we can ask participants to ask their doubts, if any, or if you want to ask anything regarding Arduino from sir. So you can unmute yourself and ask. You should take this opportunity because sir is available for you. And sir, I must say about you that despite your remarkable achievements in physics education, sir, and research, you are known for your humility and dedication to sharing knowledge. And you always remain approachable and deeply committed to mentoring students, always encouraging curiosity and innovation. And rather than seeking personal recognition, you always focus on empowering learners through hands on experimentation and practical applications of physics concepts. And so, your willingness to simplify complex ideas and your passion for teaching reflect your genuine desire to make science accessible to all, embodying the true spirit of a great educator and achiever. And we're really fortunate that you are part of this program and you are sharing your knowledge with us. And also, sir, I would like to add that your books that you referred, those publications have played a pivotal role in enhancing physics education by making it more interactive and engaging. And your work really bridges the gap between theory and practice, which allows students to apply their knowledge through hands-on experimentation and gain a deeper understanding of physics concepts. So I'll definitely share the link with students if they would like to gain more insight into the field of Arduino, because your project ideas are there and you have I want to very say well a few things explained in more. I detail. want to say a few things more. Yes, yes, sir. एक्चुअली मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि सीखना कभी मत छोड़िए। मेरा सबसे गोल्डन एज जो है वो मेरी रिटायरमेंट के बाद की है। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके ऊपर सीखना शुरू कर दिया, फिर मैंने दूसरी चीज़ों के ऊपर सीखना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैं बहुत आप जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट में आया, आर्डुइनो के साथ, आईएपीटी के साथ जुड़ा। उससे पहले जब हमारे कॉलेज में था, मैं जब पानीपत के अंदर कॉलेज में था, उस समय ऐसे फंक्शंस होते ही नहीं थे। अनफॉर्चुनेट, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस हो चुकी है, इसलिए जो है ना, हम बहुत कुछ कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों को बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना जो है ना वो लाइफ नहीं है, और आर्टिफिशियल जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ चुके हैं, और इस समय जो सबसे लेटेस्ट टूल वो है हमारे पास, जो है वो ग्रोक 3 है, ग्रोक 3। और
अगर बच्चे जब चाहेंगे, आप कोई ऐसा प्रोग्राम जब बनाएंगे जिसमें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैं उनको बहुत सारे चीजें बनाना सिखाऊंगा, कि अगर अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो देन दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल इज द टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया कितनी अच्छी है और कितनी एडवांस है, हम क्या क्या कर सकते हैं क्या। और उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वो खुद ही आपके लिए बहुत कुछ कर पाएगा। आपका जो ये जो प्रोग्राम था, जो ये बनाने का, जो क्या कहते हैं। PCB, हाँ जी। PCB, शॉर्ट टर्म हाँ, प्रोडक्ट पीसीबी डिजाइनिंग। पीसीबी जो बनाने का वो प्रोग्राम राइट था। सर। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह दिया कि मेरे लिए ये पीसीबी डिजाइन कर दो, और आप मानेंगे नहीं, पर उसने मेरे लिए पीसीबी डिजाइन कर दिया। पीसीबी डिजाइन कर डेफिनेटली दिया। उसकी उसकी गैब्रे फाइल जो होती है, और जो यस, हाँ। जर्बर जो, फाइल्स। हाँ जी। जर्बर फाइल्स वी कॉल हाँ, गड़बड़ फाइल जो है वो भी उसने बना दी। उसने दूसरा वो भी बना दिया, ठीक है ना। तो कई चीजें जो होती हैं, जब हम हाई एडवांस उसमें जाते हैं, तो इट। उसके लिए उसको सीखना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा जरूरत रहता है। और मैं तो इन बच्चों को धन्यवाद दूंगा, बल्कि इनको कहूंगा कि ये ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जब ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने तो कभी कुछ नहीं किया, जब रिटायर हो गए तो उसके बाद कुछ किया। पर ये तो अभी यंग हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनको करना भी चाहिए। थैंक यू डेफिनेटली। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप थैंक यू बताइए। सर फॉर योर सो एनलाइटनिंग वर्ड्स। सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और ये आपसे हम बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा है कि किसी भी उम्र में कभी भी अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख हाँ। सकते हैं। यस। और सर, जैसा एज आपने कहा एज इज आर्टिफिशियल ओनली अ नंबर। इंटेलिजेंस, राइट सर। So it integrates everything, like whatever we are learning, if we integrate that with AI and all, then we will become empowered. So इफ that देयर is, इज एनी क्वेश्चन, आई एम देयर। yes. है कोई Good क्वेश्चन? good evening, sir. Participants, if Good you'd like evening, to ma'am. ask any, yes, Vijay would like to ask. Uh, यस। Yes. सर एक्चुअली जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, हाँ। उसमें हमने जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था हाँ। ऑन द टिंकर कैड. हाँ, ठीक है। सो इन दैट सर्किट डायग्राम्स we used we used that Arduino chip, right? So if I आर्डिनो चिप? want to, नो 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 नो। so आर्डिनो चिप ने आर्डिनो जैसे okay, आर्डिनो यूज किया था हमने बेटा, आर्डिनो चिप तो नहीं यूज की थी। okay. हाँ, So उसमें sir, उसमें देखिए, सारे सारे अब जो है ना, कंपोनेंट सारे अवेलेबल हैं। जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं, सर्किट डिजाइन पर जाते हैं, तो उस समय वो ये आपको सारे सर्किट सारे दिखा देता है, सारे कंपोनेंट दिखा देता है। आपको रेजिस्टेंस दिखा देता है, एलईडी दिखा देता है, आप जो ब्रेडबोर्ड दिखा देता है, आपको आर्डिनो आर्डिनो दिखा देता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज, जितने भी कंपोनेंट है आपको, बल्कि बल्कि जो है ना, जो रेजिस्टेंसेस दिखा देता है आपको। आपको जो है ना, ये माइक्रो हाँ, वो भी दिखा देता है आपको। रियोस्टेट दिखा देता है आपको, पोटेंशियोमीटर दिखा देता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो अगर आप उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे पूरी लिस्ट, ऊपर से नीचे तक जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। यस सर. सर एक्चुअली मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन वाज डिफरेंट, कि हाँ। जो ऑर्डिनो था, जब हमने उससे एलईडीज को कनेक्ट किया था, वी कनेक्ट यू कनेक्टेड 3 एलईडीज, राइट? यस। सो इफ आई वांट, लेट्स से इफ आई वांट टू कनेक्ट 10 एलईडीज, बट हाँ। जो हमारा ऑर्डिनो है उसमें तो नंबर ऑफ पिंस लिमिटेड ही है सर. सो हाँ, हाउ उसमें कैन लिमिटेड वी? पिन जैसी हैं, 13 पिन हैं, ज्यादा से ज्यादा यस सर. 13 पिन हैं। तो सर और जो नंबर ऑफ पिंस को हम मैंने कैसे अभी रिड्यूस आपको कर सकते दिखाया है, जो बड़े वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसमें मेरे पास 22 पिन हैं, ठीक है। तो वो तो आपको डिपेंड करता है भाई, किस किस्म का आर्डिनो आपको परचेज करना होगा। वो उस बात पर डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं, कितने एलईडीज आपको उसको करना चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, कि अगर आपके पास मान लीजिए 12 वो है एलईडीज हैं, और आप 15 एलईडीज को चलाना चाहते हैं,
तो आपको प्रोग्रामिंग में ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ जो है ना, कि जो उसके डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ वन, एक पर्टिकुलर रिजल्ट के बाद वो दूसरी दूसरी चीज को चलाना शुरू कर दे। तो हम डिफाइन कर देंगे कि उसको हम लगा देंगे क्या चाहिए, आर्ट जिसके एनालॉग पिन के साथ भी लगा सकते हैं। और एनालॉग पिन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1024 कर देंगे। अगर हमने एनालॉग पिन की वैल्यू को हमने 1024 कर दिया तो वहां पर उसको 5 वोल्ट मिल जाएगा। और अगर हम उसकी एनालॉग पिन की वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो वो हमारे पास, वहां पर हमारे पास उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम एक एलईडी जो है ना वो एनालॉग पिन पर भी लगा सकते हैं। हमारे पास 5 एनालॉग पिन भी हैं। हमारे पास 5 एनालॉग पिन हैं, और हमारे पास 13 जो है ना वो डिजिटल पिन्स हैं। तो अगर मुझे 15 एलईडीज करने हैं और उनके साथ यही प्रोग्रामिंग करनी है तो बहुत आसान है, कोई बात मुश्किल नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि जो 13 के बाद जो 14th है या 15, 16, 17 जो है, अप टू मैक्सिमम अप टू 18th। पर अगर आपके पास जो हायर बड़े वाला जो अगर वो जो होगा आर्डिनो होगा, जो उसमें 20 तो मेरे पास क्या है जो है डिजिटल पिंस हैं, और 12 मेरे पास जो है ना वो पिंस कौन सी हैं, बोला एनालॉग पिंस हैं। तो 20 और 12 32, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। मैं आज आपको एक प्रोग्राम, अगर आप टाइम हो तो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा सकता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू हैव टाइम और नॉट। Yes, sir. Please continue, sir. ओके Yes, sir. We ओके have time. okay, okay. So I'm starting I'm sharing my screen, and then coming to the oh, this one. Participants were requested to fill the feedback form. The link is shared in the chat box.
Yes. This is a program which is a mixed color program. जब हमारा इनॉग्रेशन सेशन था उस समय हमारे पास दिखाया गया था कि कलर्स को मिक्स कैसे किया जाता है। सिर्फ वो दबाकर जो है हिलाकर उन्होंने एक वोल्टेज प्रोड्यूस की थी और वोल्टेज प्रोड्यूस करने के बाद जो है ना आपके पास वेरियस कलर्स आ रहे थे। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि मेरे पास क्या है बोला सॉरी ये मैं प्रोग्राम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास शायद वर्ड में भी होगी। कंट्रोल सी और एक मैं वर्ड की फाइल अलग से बना लेता हूँ। आधा पोर्शन ये हो गया और नेक्स्ट इसमें बाकी पोर्शन है। कंट्रोल सी ये देखिए और मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ न्यू स्केच। ये न्यू स्केच आ गया और इसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी से मैं सारा का सारा प्रोग्राम इसमें डाल दिया। अब जरा देखिए इसमें इसमें जो तीन कलर्स हैं, तीन कलर्स में से हमने 10,000 कलर्स प्रोड्यूस करने हैं, 15,000 कलर प्रोड्यूस करने हैं या ऑल पॉसिबल कलर प्रोड्यूस करने हैं और उनको आपस में मिक्स करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? वैसे हम सोचेंगे पता नहीं क्या करें। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए प्रोग्राम है ये और प्रोग्राम को तो मैं काट दूंगा यहाँ पर पहली लाइन में प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम तो नहीं है। इसको मैं स्लैश से कमेंट बना देता हूँ। ये मैंने कमेंट बना दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जरा थोड़ी सी वेरिएशन। कांस्टेंट इंटीजर रेड पिन इज इक्वल टू 9 लिख दिया है। अब मैंने पहले तो आपको कभी बताया नहीं भाई कांस्टेंट भी लिखा जाता है। कांस्टेंट जब आप लिख देते हैं तो रेड पिन को अगर आपने एक जगह पर डिफाइन किया है तो दूसरी जगह पर रेड पिन को डिफाइन नहीं कर सकते। रेड पिन की वैल्यू इज इक्वल टू 9 यहाँ पर लिखी है तो रेड पिन इज इक्वल टू 10 नहीं लिखा जा सकता, किसी और जगह पर प्रोग्राम में नहीं लिखा जा सकता है। पर अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें
तो रेड पिन इज इक्वल टू 9 यहाँ पर लिख दिया। आगे जाकर हम रेड पिन इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं। और अगर हमने रेड पिन इज इक्वल टू 10 कर दिया तो हमारे कनेक्शन ही खराब हो जाएंगे। तो दैट इज नॉट डन। और दूसरा क्या है बोला, इंटेंसिटी वेरिएशन। देखिए मैंने जो पहला प्रोग्राम था वो उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन की जा सकती थी, जो कि हम कल भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। इंटेंसिटी वेरिएशन, अगर हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे, अगर कहीं पर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो वोल्टेज जब ज़्यादा दी जाएगी तो ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ेगी। फिर वोल्टेज को कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जब वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे और उसी को हम राइट करते चले जाएंगे। मान लीजिए रेड लाइट हमने शुरू की, और रेड लाइट को हम वैल्यू देना चाहते हैं 0 से लेकर 1 से लेकर और 256 तक, 256 तक। ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो आप दे सकते हैं वो 8 डिजिट 8 क्या कहते हैं 8 बिट कनेक्शन से आप 256 वैल्यूज दे सकते हैं। तो 0 से लेकर 256 तक ले जाना है, या फिर हमने हमने 0 से लेकर 127 तक ले जाना है, या कुछ भी करना है। तो वैल्यूज अगर मैं पहले सिर्फ रेड जला दूं और बाकी इंटेंसिटी रेड की मैं क्या कर दूं, मैक्सिमम कर दूं, और ग्रीन की और येलो की मैं इंटेंसिटी को क्या कर दूं बोला, 0 कर दूं, तो क्या होगा, इंटेंसिटी उसकी 0 कर दूंगा तो क्या होगा बोला, तो हमारे पास से सिर्फ रेड लाइट नजर आएगी। और फिर बाद में मैं प्रोग्राम के थ्रू क्या कर दूं बोला, एक जगह पर रेड भी जला दूं और ग्रीन भी जला दूं, और रेड की इंटेंसिटी कुछ और कर दूं, ग्रीन की इंटेंसिटी कुछ और कर दूं, तो क्या हो जाएगा, उससे उससे हमारे पास दो कलर मिक्सअप हो जाएंगे, पर अलग अलग इंटेंसिटी के कलर्स मिक्सअप हो जाएंगे। अलग अलग कलर्स के इंटेंसिटी से उनका जो कलर बनेगा वो डिफरेंट कलर बनेगा। तो इस तरह अगर मैं फिर उसके बाद ग्रीन को भी चला देता हूँ, RGB जो हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको चला देता हूँ, तो उससे क्या होगा बोला, उससे हमारे पास अगर इंटेंसिटी को चेंज करते जाऊंगा, पहले एक की इंटेंसिटी, फिर दूसरे की इंटेंसिटी, फिर तीसरे की इंटेंसिटी, या साइमल्टेनियसली सारी सारी इंटेंसिटीज को अगर मैं चेंज करूंगा, तो वो वैल्यूज हमारे पास, और उनको मैं राइट करता चला जाऊंगा। किसके ऊपर बोला, इन तीनों तीनों उसके ऊपर राइट कर, तीनों LEDs के ऊपर राइट करता चला जाऊंगा। तो क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे कलर्स प्रोड्यूस होंगे। और यही काम मैं 4 LEDs के साथ भी कर सकता हूँ, 5 LEDs के साथ भी कर सकता हूँ। पर बेसिक हमारे पास जो होता है भाई, RGB जो होता है, रेड कलर, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर जो होते हैं, वो हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। उन प्राइमरी कलर्स के वेरियस इंटेंसिटीज को मिलाकर ही हमारे पास वेरियस और दूसरे कलर्स बनते हैं। उसका हमारे पास ये प्रोग्राम है। और क्योंकि हमारे पास इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, या अगर कहीं, हाँ, एरर एरर इसके अंदर कहीं नहीं है। इसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ बोला, मिला देता हूँ, और आप देखेंगे इसमें इसमें कुछ पहले इंटेंसिटी कम होती जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी, दूसरे दूसरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है। ये हमारे पास, अगर इसके ऊपर मैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास लिख दूं, ग्लास रख दूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा, इन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, इन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। और उस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास मिक्स कलर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके ऊपर क्या लॉजिक लगाया। मैं जो आपको बता रहा था कि हमारे पास जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत यूज हो सकती है इस प्रोग्राम बनाने में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक कमांड दी थी, एक प्रॉम्प्ट दिया था। उस प्रॉम्प्ट में मैंने कुछ लिख दिया था कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करके दे दीजिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम बनाकर दे दीजिए। ये सारा प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया है, ये सारा प्रोग्राम मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। और ये काम मैं आपको कुछ जब मेरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्डिनो के प्रोग्राम बना सकता हूं। और अगर मैंने ये बता दिया आपको, तो फिर आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जब मर्जी आप करना चाहेंगे, जब भी मर्जी आप कोई भी प्रोग्राम, उससे आप किसी भी किस्म का डिवाइस बनवाना चाहेंगे तो वो डिवाइस बन जाएगा। आपका मेन मेन जो ये है, जो सीख रहे हैं आप, वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग सीख रहे हैं।
आप आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम इससे बनवाना चाहेंगे वो बना सकेंगे, इंटरनेट के थ्रू इसके थ्रू बना सकेंगे। मैंने केमिस्ट्री उसके ऊपर कभी कभी वर्क नहीं किया है, पर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स, मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स इससे किए जा सकते हैं, यानी जे कह सकते हैं। मैं नहीं बता सकता, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तो मैं नहीं बता सकता, पर फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप बना सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप आर्डिनो की मदद से कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, और आपको पीसीबी तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप पीसीबी के थ्रू ये बनाकर जो भी डिवाइस बनाना चाहते हैं वो बनाकर यू कैन डू ए वंडरफुल वंडर। थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir. Yes, this forum is open for questions and discussion. If anyone would like to add anything or ask anything. So with this, I guess there's no questions. So with this, we have come to the end of this session 4. And I just like to thank sir for taking out time for this session and explaining each and every concept with so much clarity and enthusiasm. My pleasure. And Thank you very yes, much. I would like to now invite Professor Poonam Juneja ma'am to give a formal vote of thanks. Thank you, Prajwalit. Though you have already done my work, and thanks, sir. But sir, formally, on behalf of the department and all the participants, I wish to thank you from the bottom of my heart for clearing the doubts of the students and explaining each program so carefully and so nicely. Even small things like how to create a new folder or how to copy paste, most of them already know this, yet you have taken the pain to explain the smallest of things so carefully and so nicely. It is almost like a revision of everything, and one can visualize the entire steps, and I'm sure the students and the participants will appreciate that the way you explain things, they will not forget how to proceed in the program. It is so simple once you have explained it so well. So thank you so much, sir. And I'm sure the students Thank are you, also, Poonam ji. and the thank you, sir. We are really grateful to you that you've taken out so much of time and taken so much of effort to participate with us and guide our participants also. So thank you so much, sir. And it's We can Prajwalit, have you a photograph, ma'am, group photo. Yes, So yes, sure. participants, you can please switch on your camera for a group photo. I'm happy to see everyone. I don't know whether you are happy to see me or not, but I am at least happy to see you. So we all are very happy to see you after the 24th during the workshop and now again. Dr. Parul, has the photo been taken? Yes, ma'am. Dikshit. Thank you. Thank you. Okay, so the photo has been taken. Thank you, all participants. And thank you, sir, once again. Thank you. For such an insightful lecture. Everyone. Thank you, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Yes. Ma'am, can we have the access for the video of the last session by Arun sir?
It has already been the shared in the recording. classroom. Right, No, ma'am? that was not visible to me. I have only with access of that recent sessions. पर जो अरुण सर के साथ फर्स्ट सेशन हुआ था संडे मॉर्निंग, बस उस प्रोग्राम में मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है. आई वांट टू रिविजिट दैट. But that has already been shared. Ruksar, you are there? Maybe Dr. Parul may clarify this. Yes, ma'am. She's asking I that will she's check not able again. to access the video of Mr. Arun. It is already shared in the WhatsApp group. The YouTube link WhatsApp is group. shared. Also in Okay, the I was classroom, checking on right? the classroom. Huh. Not in okay. Please check WhatsApp. Well, I was checking in the classroom. That's why I was not able to find. I will check on the WhatsApp. Thank you. Huh. YouTube link is shared. Okay, thank you, ma'am.